तू कण कण बन के दिल दी मेरे विच मरू लवा तू कण कण बन के दिल दी मेरे विच मरू लवा तू कण कण बन के दिल मेरा जो तड़के जिन्नी वारी तड़के तेरे ली कड़के हर हाल ते पालना रब तो दुआवा करके दिल मेरा जो तड़के जिन्नी वारी तड़के तेरे ली कड़के हर हाल ते पालना रब तो दुआवा करके दिल मेरा जो तड़के जिन्नी वारी तड़के तेरे ली कड़के हर हाल ते पालना रब तो दुआवा करके Which, that's why trading is so tough. And it's like, so, all right, if we're just going to analyze the action, one this hourly candle is going to be so volatile. Which, that's what's why going trading is so on? tough. And it's like, so, all right, if we're just going to analyze the action, You get it, or this hourly candle is going to be so volatile. What's on it? Oh. Which, What's that's why going trading is so tough. on? And it's like, so, all right, if we're just going to analyze the action, you get one it, Why or did I hourly candle is going to be so volatile. Leave it. Yo, what's going on, boys? What's fucking going on? I think you can you all can hear right. Yes, sir. What's up, bro? Took the same trade ICT top tick. Fuck yeah! Fuck yeah! मेरे को करना था भाई top tick. Watch my video. मेरा execution था. My buttons was at the sell button with 3 contracts, right? But I was like, चलो मैं आगे चूँ. Let me wait for a little bit more. But I just entered on the next. Top tick was pretty valid. I would have. But मेरे को भाई, I wanted to be a little. I don't wanna fucking be freaky and end my Friday red. So, bro, simple price was inside daily. IFEG at upper quadrant. 25 with Friday new. Inside daily IFEG.
Oh yeah, somewhere around here. Oh man, it's you know what way better was? Just use the fucking suspension block. Just use the bloody suspension block here. That's ICT grey pool right there. One of the reasons. Okay, let me show you all something, right? ठीक है? And trader Rosa, what's going on, buddy? मैंने भाई ये grey pool, I already marked the grey pool. I'll show you the grey pool. ठीक है? When I was watching market here, मेरे पास left side में मेरे को ये wick दिखा, मैंने तो इसको पूरा disregard कर दिया because that's our swing high. Okay, I looked to the left. Okay, मैंने ये wick लिया, I marked this wick's consequent encroachment. I marked this wick's consequent encroachment. The common area between the both, right? वो बहुत छोटा area आ रहा है. Okay, this is our ICT grey pool. Bro, now this is technical science here. Okay, ये हमारा हुआ ICT grey pool. ठीक है? अब now you're like, oh, this nigga is just drawing a bunch of fucking lines on the chart, blah blah blah. You all are gonna fucking cry about that, right? But अगर you all, ठीक है, जो बंदे ऐसे you know, the people that don't know what they're fucking doing, they learn from 5-minute trainer videos, they would anticipate इधर limit लगा के बैठेंगे ऐसे somewhere around here. That's their limit gonna be. Brother, it ain't gonna trigger your fucking limit. It ain't gonna trigger your fucking limit. Why? You see 930 opening price right here. What is the nearest array to it? This inefficiency plus the fucking grey pool. Look at that. Look at that. Okay. Niggas can call it random, but bye. I've been doing this for fucking years, brother. Years, brother. Dixie. I was anticipating कि Dixie bullish हो जाए. Dixie is bullish. Okay, I want to see Dixie reach climb higher relative equal highs here. यहाँ अगर relative equal lows छोड़े, मेरे को देखना है अगर Nasdaq this dump on Nasdaq was temporary. ठीक है, अगर उनको I don't want to see if they wanna see. मेरे को पता था वो equilibrium इधर पड़ा है. ठीक है, Monday yeah, Thursday का equilibrium. मैंने Thursday I didn't mark from this swing low. मैंने Thursday का लिया कि that's the swing low that gave us a fucking move. Okay, so equilibrium is right here. Okay. Now we're trading into a daily basis, another inversion right there. Okay, this is that inversion here. And we're trading up into it. Uske andar ja rahe. Now I want to see if price wants to come back into this new day opening gap here. Right, we visited the old pull buy side. Yeah, new week opening gap bhi hai. And if I want to see if they want to take it thoda higher, and then from there we can look for a continuation to the downside. And we have two first presentations from Wednesday and Thursday. Thursday का भाई था हमारा breakaway gap. So what does my advanced first presentation model say? Whenever the first presentation gets left as a fucking breakaway gap, right? कल people shorted, ठीक है? They made money here. यहाँ see this ये जो short बना है यहाँ I would anticipate क्योंकि वो buy side लेके आ रहा था. I would anticipate कि वो जाए first presentation breakaway gap. But वो fail किया, ये भी fail किया, and we did not reach to the first presentation. तो अब मैं market से चाहूँगा, I would demand कि come back and dip into that breakaway gap first presentation. Now that's my advanced model. Whenever first presentations get left as a breakaway gap, we always anticipate a return back into it. ठीक है? अब मेरे को देखना ये है. Bro, they knowingly pushed. Oh, yeah, of course they did. Of course they did. If you watch that video, I already said कि again मेरे पास ये जो highs थे. Again, bro, it's all like a monthly par 3 happening here. Where the fuck's the monthly open? Let me show you. Where the fuck is the monthly open, nigga? Oh, you see this? That's the monthly open. Okay, I'm opened up and doesn't matter. Doesn't matter. Of course, buddy. Of course, they pushed price higher, man. Of course, man. And they actually wanted to take it to the new week opening gap as well, because you know higher probability reversals. The thing was, right? What they were trying to do was they were just trying to get price above the weekly open into a deep premium, so that they can accumulate more short positions, right? That happened pre-market, right? They accumulated. This is our weekly open, right? So anything above the weekly open and at the weekly open or right below the weekly open, they're accumulating short positions, right? Preferably above and at the weekly open. They accumulated short positions, okay, here for the distribution to the downward. I'm watching, okay, first presentation, ठीक है? मैंने कहा था मेरे को इधर देखना है, return back into it, comes back into the lower quadrant, that inversion. What time is it? It's 10:30. Now it's 10:30 that I would anticipate कि भाई मेरे को देखना है कि if they want to take it here. If they don't want to take it here, that's going to be a sign of weakness. ठीक है?
Bro, this is so fucking, I know, bro, this is so fucking beautiful, right? And then opens up, goes straight higher when your bias is bearish. See, इधर it was very tricky. I'll tell you why. मेरे दिमाग में क्या था पता है? मेरे दिमाग में मेरे को दोनों साइड्स फ्रेम करने पड़ते हैं ओपन के पहले, फिर ओपन होने के बाद मैं एक साइड पिक करता हूँ, राइट? बिकॉज नो, यूजुअली मैं एक साइड पिक करता हूँ, मैं उसको ट्रेड करता रिगार्डलेस ऑफ व्हाट द ओपन डज, बट आज मेरे को थोड़ा डाउट इन द माइंड था बिकॉज सी आई वाज वाचिंग, मैं रियल टाइम में देख रहा था, एंड मेरे पास ये जो रिलेटिव इक्वल हाइज थे इधर, तो I wanted to see what the open does. So open होने के बाद what they did is they went up straight without filling the org opening range gap. They took it into this 15-minute CB here into a new into an old new week opening gap. And then because they took it higher first, right? If they had taken it lower first, right? Then I would look for longs, but अगर अच्छे longs नहीं बनते, then I would have skipped. But the fact that they took it up into the open, like at the open वो ऊपर लेके गए, then it's pretty valid. You're gonna see कि left side पर है क्या, हमारे पास suspension block था, right? We traded into the suspension block to a tick here, right? And then we literally traversed lower. At the same time, Dixie ने 9:30 का 15-minute candle is a bullish candle. MNQ पर 9:30 का candle is a bloody bearish candle. Now that's a nice little divergence right there. Bro, you don't need retracements, man. Like, that's the thing, right? This is your retracement. ये है भाई आपका retracement इधर. That's the Judas, right? It's always gonna be there's always gonna be something on the left side, right? Again, relative equal highs breached, right? ये जब open हो रहा है, यहाँ आप देख रहे हो कि ये breach हुआ, right? Inefficiency के अंदर गई, new day opening gap के अंदर गई, daily C suspension block के अंदर गई. Like Pip Tesla was saying, it went into the lower quadrant of this inversion FEG here. Suspension block or whatever you can adjust कर लेना, सब तो character तो एक ही होता है भाई. It's a fucking gap. It's a fucking FEG. Bang on, bang on. That's my sell right there. There we go. That's my sell. Took it off here. ठीक है. I wanted upper quadrant, but मैंने मांगी shoot. I was like Friday, भाई. Fuck it, let me fucking close it. I don't want to demand. See again, I said कि मेरे को देखना है if they want to take it into here. ठीक है. फिर if यहाँ पहुँचने के बाद अगर कुछ अच्छा सा first presentation की ओर गिरे तो that's more better. So I'm watching it. Either nothing, nobody's trying to do anything, right? As well as opening यहाँ 9:30 यहाँ opening range gap low भी आ रहा है, तो मेरे को देखना है भाई वो 10 मिनट वाला क्या सीन हुआ था मेरे साथ, वो कुछ समझना. फ्यूचर लेट था CDF उसे. ब्रो 10 मिनट का सीन ये है कि भाई ये चलते हैं भाई रियल टाइम डेटा पर, राइट? यू हैव टू पे फॉर द सब्सक्रिप्शन. सो अगर आप लूसिड या कोई फ्यूचर्स प्रॉप फॉर्म को ट्रेड कर रहे हैं, देन दे विल गिव यू द सब्सक्रिप्शन फॉर फ्री. अगर मैं अब इसी टाइम अगर मैं CFD में जाऊँ, NAS 100, right? Let me take fucking forex.com. यहाँ it's almost the same, right? सब तो same ही है. But again, I would always say कि आप charting purposes के लिए always use future contract, because अगर see मेरा तो subscription paid है, right? Because I trade my live account as well. तो TradeOvate provides it for free. TradeOvate का live है तो वो free में देते हैं, right? तो जब अगर आपके पास है नहीं तो वो 10 कैंडल पीछे चलेगी. And when you try to execute, it will execute at the market price. आपका एंट्री होगा कहीं ऊपर और नीचे, आप वंडर करते रह आप you're gonna think कि ये क्या हो रहा है. तो भाई either buy futures eval आपको फ्री में मिल जाएगा, और just pay for it per month. I think it's $10-12. TradeOvate से ट्रेडिंग व्यू से मिलता है, CME ग्लोबल एक्सचेंज का डेटा. समझ आया भाई कुलदीप ब्रो? जिनी वारी तड़के तेरे ली कड़के हर हाँ से पाल. Okay, let's take a look at ES. Again, this was at my main chart. देखा suspension block के अंदर गया. अरे हाँ बढ़िया, यही कर लो. So this is that daily order blocks opening price here. ठीक है, it failed to reach it. Weakness, nigga. SMT at the eyes. Final confirmation. SMT को भाई ऐसे देखना, right? When you're watching price real time, bro, next month's gonna be fucking amazing, bro. I'm telling you.
So when you're watching real time, यहाँ आप SMT use करोगे कि to gauge which asset is weak and which asset is weaker, right? फिर अगर it's like cherry on top, SMT is like cherry on top. Also थोड़ा algorithmic signatures देखना पड़ेगा. ES पर हमने Monday के equilibrium already reach कर दिए, we've already reached it. Okay, note some few signatures here, ठीक है? ये 60 मिनट से भी प्री मार्केट से प्राइस नीचे आ रही थी, राइट? सो दैट मेरा मार्क्ड है. ये जो हाई बना है, like bro, when it edges the 60-minute premium after taking relative equal highs here, right? यहाँ edge करने के बाद when it traverses lower, now that's your sell. How do you top tick and fucking bottom tick? How do you trade without confirmation? Just fucking gauge price. यहाँ ये आपको दिखा रही है कि ये weak है. Real time I'm saying bro, like candles के अंदर there is some kind of a कुछ है Brian, this is something in you that I'm trying to develop. Like I'm trying to develop this into all of my students ki, like as the candle is printing, you are watching it so closely. जब आप गाड़ी चलाते हो, you know how smoothly you drive the car, right? You know आप बात करके भी चला सकते हो, you can do anything. ऐसे आप कैंडल देख रहे हो, ये भी एक गाड़ी है, ऊपर जाएगी नीचे आएगी, ऊपर जाएगी नीचे आएगी, बस यही होता है. So you're watching it closely and ये हो गया signature. और ये एक तो था भाई 15 मिनट सिबी इधर, तो मैंने उसको I wanted to see because I wanted to see कि बैंक जो प्राइस क्या कर रही है. And as soon as इसको edge कर इसके नीचे आ गए इधर and it trades up higher, that's going to be your reclaimed सिबी, bang on towards relative equal high. और एक नोटिस करना, the reason for shorts was 915 का candle was a fucking devil's mark. When you have a devil's mark, you don't lower, you don't fucking long. Yep, exactly, bro. You have to feel the candles, bro. That's the part, man. That's the part. यहाँ feel करना पड़ेगा भाई. अगर feel नहीं आएगा, then you know you're a pattern trader. I don't know. I mean, I don't have anything against pattern trader as long as you're fucking making money, bro. As long as you're true to yourself. Like मैं आके the way I act is as if I am ICT's father, but that's not the case. But again, I live up to it. I live up to being a very good student of this. I live up to it, bro. Every fucking day. You all are seeing it. You all are fucking seeing it. Give me a minute. एक मिनट दे भाई. Okay. 6 बंदे भाई. Okay. Who wants to see gold and shit? किसको देखना है gold? Actually, you dude, shut the fuck up, nigga. No fucking way gold takes out our sell side, nigga. Oh yeah, all of that are acting as it. See again, this is that big pool of sell side. So, मैं तो भाई, if I was trading gold, I would only look for distribution shorts to the downside. Now this is gonna act as a reclaimed SIBI, so my color is gonna switch from orange to red. That's gonna be a daily reclaimed SIBI. Sell side taken here, I would anticipate कि इसके आधे के नीचे रहे and really attack the bloody fucking sell side, man. It's been a while, nigga. It's been a while, bro. दिखाता हूँ भाई, चलो मैं दिखा देता हूँ, थोड़ा क्लोजली दिखाता हूँ. इसको हटाओ. Okay, gold, I think हमने gold बहुत देर से follow कर रहे हैं. From here something touches it, leaves, takes out the sell side ये wick के अंदर आई. So if we are bearish, we want to see price stay below the consequent encroachment. It did go above the consequent encroachment, close हुई, but close होने के बाद ऊपर गई कहाँ? यहाँ हमारे पास एक profitables के stop पड़े, swing high inside the fucking inefficiency, उनको उठाए, drops it lower again, takes out the sell side. इधर एक चीज नोटिस करना है, ये sell side और यहाँ जो लो छोड़ी है इक्वल छोड़े हैं, तो ये जो रन अप हायर है, यू वुड एंटिसिपेट कि भाई ये रन अप हायर ऐसे फेक है, राइट? यू वुड एंटिसिपेट कि ये डाउन क्लोज प्राइस को होल्ड करे या थोड़ा और अगर उनको ऊपर रन करना है ये इसके कॉन्सिक्वेंट इंक्रोचमेंट होल्ड करे. बट यहाँ मार्केट ने आपको ऑलरेडी दिखा दी बाय कमिंग हियर that this is gonna start acting as a reclaimed fucking SIBI, right? At this point in time, I called it to be an inversion to send it price higher, but at this point in time here,
When this candle closes here, this becomes a reclaim CB. Touch it, goes all the way down. Okay, ये भी reclaim CB बन गया. इसको भी touch किया, इधर नीचे गई. ये wick जो है उसके consequent encroachment. Look at the body being shy there. Stop हो इधर, right? Again, थोड़ा यहाँ this is consolidation. थोड़ा होता है भाई. थोड़ा होता है भाई, थोड़ा होता है bro. Because you know it's again bro, what do you expect bro? Reaccumulate करने दो ना भाई. Reaccumulate के फिर redistribution मिलेगा नहीं. What the fuck nigga? Fuck, I hope no fucking black people are watching. You know what? I'm black. I'm half black. What do you say about that? I think I have the end pass, bro. मेरे पास बहुत black friends है, bro. Honestly, I'm saying. I have friends from Nigeria. I have friends from America. I have friends from fucking I don't know, Egypt. Okay, so now at this point in time हम expect करेंगे यहाँ एक swing low बनाए उसको breach करे, यहाँ एक swing low बनाए उसको breach करे, यहाँ एक swing low बनाए. So ये pool of sell side, ये pool of sell side, ये pool of sell side, as well as this major pool of sell side, this major pool of sell side is gonna be very key to us. तो आपको दिख रहा है reclaimed CB को हमने कैसा यूज किया इधर, इधर. Look at the bodies, look at the fucking bodies. Come back here now. ये this is highly balanced, so any return back higher, price should stay here somewhere around here. अब तो फ्राइडे हो ही चुका है, अब देखते हैं भाई अगले हफ्ता होता क्या है. Dixie again. Okay, what did I say? People that shorted here got their ass fucked. They got their ass fucked. Am I right or wrong? I told you, brother. I told you. इधर मैंने कहा wait a bit nigga. Wait थोड़ा wait करो. Let them run it up higher. Let them run it up higher because I know for a fact that they are gonna run it up higher. X account, ICT banks, 360. Everybody fucking follow this guy, man. Man, I don't use X that much now. It's not like before. I'm just so tied up, man. I mean, I don't find time. Is it just me? मेरे पास time नहीं है भाई. I don't know, man. I don't know. I don't get time, man, for some fucking reason. First of all, always outside. घर में है तो भाई पढ़ाओ, स्टूडेंट्स को कोच करो. अगर मॉर्निंग है तो भाई चार्ट्स पर बैठ के ट्रेड करो. ट्रेड करने के बाद घर से बाहर निकल जाओ. कॉफी हो गई भाई ठंडी. You know what, भाई? You know, 1000 subscribers होने के बाद, right? Once I hit 1000 subscribers on YouTube, which I don't give a fuck about. Uh, this guy is 18 plus for real, for real. And this ain't for kids, bro. Whenever I upload YouTube video, I specifically say, no, this ain't for kids. Yes, sir. What was I saying? What the fuck was I saying? तो हाँ भाई 1000 सब्सक्राइबर्स होने के बाद fucking you know what हम करेंगे भाई webcam on कर भाई बकचोदी करेंगे भाई for real bro. Dixie, let's ये देखते हैं भाई थोड़ा गोल्ड का ओपनिंग रेंज थोड़ा देखते हैं भाई. ओपनिंग रेंज तो गोल्ड में ऐसा नहीं होता है बट अगेन देखते हैं. So opens up here, okay, coming from first presentation किधर है? I have no idea bro. मेरे को I'm so I mean idea है. That's our first presentation there. Okay, touches it there. Oh, यहाँ एक चीज notice करना again. My first presentation model could have been used here as well. जब ये breakaway gap होता है वही session में you can anticipate a return back, right? ये सब तो इसको छोड़ो. Wait for 10 a.m. I think 10 a.m. is better. When the short term high gets taken, you get that fair value gap, you buy that, and this is where you're gonna aim at, as well as something like this. Match that by waiting for webcam. Let's fucking go. I don't know, man.
इस कोई बंदा इधर इंस्टाग्राम से नहीं बट यूट्यूब से आया है, आई डोंट नो, कोई बंदा दैट हैव फाउंड मी ऑन यूट्यूब, लाइक यू गॉट टू नो अबाउट मी फ्रॉम यूट्यूब नॉट फ्रॉम इंस्टाग्राम, कोई है ऐसा कोई इधर? ओ ट्रेड एक्सप्लेनेशन, चलो भाई ट्रेड एक्सप्लेनेशन एक और बार दे देते हैं भाई, चलो लेट्स एक्सप्लेन द ट्रेड, ठीक है। I'm figuring out what to show this guy so that he doesn't feel it's too complicated. You know what? You know what? You know what? Let me explain. If you fucking leave, Shreyas bhai, if you leave, I'm explaining on a fucking naked chart, okay? I'm explaining on a naked fucking chart. Okay, let's fucking go. So, we saw, okay, Nasdaq, oh man, you got weekly review, fuck no. Fuck no, bro. At this point in time, okay, आपने suspension block मार के थे, let's mark the suspension block with him. Okay, ये क्या हुआ यार, ये क्या कह रही, what the fuck did I start saying कि oh okay, so at this point in time, okay, so at this point in time here ये हमारा suspension block है, right? We also have our daily order block price, mark करो, we are gonna gauge price, okay, we're gonna fucking gauge price if it's bearish or bullish or bearish, ठीक है। यहाँ हमने सेल साइड उठा के रखा है, राइट? तो एनीवे यू कम इनटू अ स्ट्रेट 1 मिनट पर आए, वो क्या सो इजी ओपन्स अप। मैं आपको एक और चीज दिखा देता हूँ, आप ओपनिंग रेंज गैप देख लो एक बार सर, ओपनिंग रेंज गैप, दिस वाज दैट क्लोज और ये था हमारा ओपन, ठीक है, ठीक है। give me a second, let me put 1 and let me put 0 right there, ठीक है। That's our opening range gap. We have our suspension block here. We have our daily order block here. ठीक है। अब अगर सस्पेंशन ब्लॉक मार के इफ यू नो अगर आपको कर यू कैन इट्स हायर टाइम फ्रेम पीरियड है, ठीक है। ओपन करने के बाद क्या किया, इट्स गोज थोड़ा लोअर, ठीक है, एंड देन गोज स्ट्रेट हायर इनटू द सस्पेंशन ब्लॉक, दैट्स योर जूडस स्विंग। एक और चीज आप नोटिस करना दैट वी हैड आवर न्यू डे ओपनिंग गैप यहाँ, दिस इज आवर करंट न्यू डे ओपनिंग गैप, दैट्स वेयर वी closed, okay? That's where we opened, ठीक है, that's our new day fucking opening gap right there, ठीक है, that's our new day opening gap। MN के ऊपर थोड़ा बड़ा है for some fucking reason, और हम ये we had our new week opening gap भी हमारे below है, ठीक है, ये हफ्ते का new week opening back बढ़िया है भाई। रिट्रेसमेंट इधर, ये दिस वाज योर सेल, ये जो फेयर वैल्यू गैप पर प्रिंट हो रहा था ये आपका सेल है। यहाँ आपका सेल क्यों आ रहा है, बिकॉज यहाँ आप एक नोटिस करना कि मैंने दिखाया था भाई, ग्रे पूल पड़ा है, उसको ग्रे पूल को अगर आप छोड़ोगे तो आपको दिख रहा है ये विक है, राइट, ये विक को वी बैलेंस डिलीवर्ड हियर, ठीक है। ये हमारा 930 ओपनिंग प्राइस है, दैट इज आवर ओपनिंग रेंज गैप लो इधर, राइट। सो ये विक हमारा एक्ट करेगा एज अ डिस्काउंट विक, ठीक है। नो सॉरी, आई एम सॉरी, इट्स कैन एक्ट एज अ प्रीमियम विक, ठीक है। तो देखा बॉडी स्टॉप्ड राइट एट द 930 ओपनिंग प्राइस देयर। और अगर आपको ग्रे पूल देखना है, इफ यू वांट टू बिकम अ लिटिल एडवांस्ड, राइट, बिकॉज भाई दिस इज अ पजल है, आई लुक एट दिस एज अ पजल, राइट। तो मैंने ये विक और ये विक इधर कॉमन आ रहा है, राइट। So I'm going to take these two wicks, or I could take this this wick here, this wick here. I would preferably take this wick here and this wick because that's how you mark your gray pool, ठीक है। दोनों का हाफ मार्क करो, आपको एक छोटा इसका हाफ और ये दूसरा विक के हाफ के बीच में यू विल फाइंड अ स्मॉल लिटिल एरिया, ओके, उसको हम कहते हैं भाई ICT ग्रे पूल, राइट। सो दिस यहाँ लुक एट हाउ द फकिंग बॉडीज, नाउ यू डोंट एक्चुअली नीड दिस, बट अगेन अगर आप कर रहे हो, अगर आपको पीक प्रेसिशन चाहिए, बिकॉज आप इधर शॉट मार के आप अपने स्टॉप इधर लगाओगे, दैट्स व्हाई यूजुअली पीपल आर गेट द शॉट हियर, राइट। वो स्टॉप इधर लगाएगा, कौन करेगा भाई 80 एल का स्टॉप लो, मैं कभी नहीं करूंगा, मेरे को चाहिए भाई 50 से अंदर 35, वेरी नाइस, देखा, दिस गिव्स यू पीक प्रेसिशन। हाँ हाँ हाँ, वो भी चलेगा ब्रो, बहुत सारे, इट्स एंडलेस,
आप एंडलेस पॉसिबिलिटीज, अपने अपना अपना इसको फ्रेम करो, लाइक जस्ट दैट्स इट. आइडिया कुड बी एनीथिंग. ये इसके इसके ऑक्टेंस को मार्क कर दो. लेट्स डू इट. Let's do that as well. Let's read how that went through. Right. Now let's give it a color of pink because we're going to use it as a premium array. है ना? Now अगर आपको see again, look at how the bodies came back. वहाँ suspension block touch करते ही order block को fail किया reach करना. ये black line हमारा order block है. उसको fail किया. जल्दी आ गई या close हुई. बहुत aggressively consequent encroachment के below close हुई. Right. So again, that could be your cell right there as well. Or this could be your cell here. Taking that discount wick. Bro, डायरेक्ट शॉट हमेशा मारना तब लेफ्ट साइड पर जैसा ऊपर गया है ऐसा एंटिसिपेट करके डायरेक्ट शॉट मारना. पॉकेट क्या हो जाएगा, स्टॉप आउट हो जाएगा, बंद कर देना वहां. बस भाई अगेन बिल्ड करेज, बंद कर देना बस. दैट्स इट. फिर पेपर वेपर में ड्रिल विल करते रहना. दैट्स इट. अगेन गोल्ड हायर. एनक्यू क्या कर रही है अभी? NQ मैंने कहा I wanted to see it come back into the new week opening gap and the new day opening gap. It's making its a run. ठीक है people ऐसे भाई ऐसे मत करो. 15 मिनट सिबी के अंदर आई उसके मतलब क्या आप शॉर्ट कर लोगे? यहाँ आई ठीक है. You know what people do? You know what people? I'll tell you what people do. They wait for a tap, right? And they wait for an inversion. Inversion trade क्या करते हैं? Boom, inversion, close. They're gonna take the fucking close. Bang on, you got stopped out right there, nigga. Hell nah. Hell nah. I'd be so ashamed of myself if my students start doing that. ये क्या कर रहे हो? The hell are you doing? First of all, if somebody I teaches fucking comes and shorts here, I'm gonna be like, nigga, what were you doing here? The fuck were you doing there? Oh, मैं सो रहा था. हाँ सोते रहो भाई. सोते रहो bro. सोते रहो. Amazing. ओ मैं बाहर था. ओ मैं मेरी गर्लफ्रेंड से बात करता. हाँ गर्लफ्रेंड आके तो करेगी तेरा पे बिल पे. ब्रो ये सब छोड़ो भाई. गर्ल्स आर नेवर गोना फकिंग अंडरस्टैंड. इफ यू आर अ फकिंग ट्रेडर, लड़कियां को दे वोंट अंडरस्टैंड. ठीक है, दे थिंक कि हम डिल्यूजनल है. बड़ी डिल्यूजनल पेस बाय बिल्स हियर ब्रो. Delusion. I was talking to this bitch very recently, right? This bitch comes and calls me fucking delusional. Bitch ass. Isko mere, she doesn't have any idea about my social media. She doesn't know how much money I make, right? But then I think something like that. फिर ये बहन की लोड़ी कहने लगी कि it's no, ये she didn't call my dreams and shit delusional. She called I mean she called me delusional. I told बहन की लोड़ी मैं तेरे को लेके चलूंगा दुबई for real. We'll start living there. She calls that delusional. अरे क्या मैं आ जाऊंगा भाई दुबई 2000 में. Fuck you. Anyway, come back to trading. You shorted with an inversion confirmation, but how the fuck you shorted without an array? You know why? Because it had a fucking new day opening gap in here. And you know why? You want to see why? I have it here. I'll show you why. You know why? You see this here? This is our... अरे ये क्या है भाई? No. Hold on. I'm gonna look at NQ, bro. ये जो line है, ये जो 100 दिखा रहा है, green line, this is one of our opening range gaps. कौन सा दिन का है? हमारा 23rd July, previous Thursday का. We had a big opening range gap. तो मैंने मेरे analysis में I made one thing very clear that people that watched it, ठीक है, मैंने annotations को remove नहीं किए. मैंने कहा था when was it? FOMC को हमने short किया इधर, right? No, FOMC was... When was FOMC? Tuesday, Wednesday? Oh yeah. So I made my weekly outlook on Sunday इधर. तो मैं ये सब तो बना नहीं था, राइट? तो मैंने ऑलरेडी इधर कह दिया, इसके बीच में ये जो गैप है इसके बीच में मैं वीडियो बना रहा था, मैंने कह दिया कि इफ हम बेरिश, आई डोंट वांट प्राइस टू कम अबव ये जो ओपनिंग रेंज है. बिकॉज लुक एट प्राइस, हम जब गिरे हैं, ये जो इतना बड़ा ऑर्ग बना है कोइंसाइडिंग विथ ये ऑर्ग, राइट? ये मैंने सिर्फ 2 और ओपनिंग रेंज को मार्क करके रखे हैं. नाउ नोबडी इज गोना कम एंड टेल यू दिस, राइट? नोबडी इज गोना कम एंड टेल यू दिस. ये ओपनिंग रेंज गैप और ये ओपनिंग रेंज गैप देख रहे हो आप कैसे दे आर अलाइनिंग, राइट? तो हम जब गिरते हैं, अब इसको थोड़ा ऐसा फ्रेम करो, आप समझो कि ये एक फेयर वैल्यू गैप है,
let me give you some fucking sauce right here. ये आप समझो कि एक fair value gap है. In the classified as an उसका first utilization बना एक BC. ठीक है? ये gap up जो बना. Imagine it's a BC. ठीक है? और ये जो gap down बनी, gap down, वो उसका first utilization हमने उसको हम we are going to imagine it as, hypothetically we're going to imagine it as. Now nobody is going to fucking tell you this. When I say I'm a charter member, I fucking mean it. Okay? So this is your first utilization यहाँ से भी. ठीक है? Because we have gapped up here, we have gapped down here. देखा? So जब ये और ये, when they align, what do we call both of the areas? We call it a inversion fair value gap, or as I would like to say, we call it a balanced price range. ठीक है? Okay? ये opening range अच्छे से mark करना. यहाँ मैंने roughly mark किया, but this is that low, this is that high, this is that low here, this is that high. Okay? Now वो line है, आपको logic समझ आ गए. When we are bullish, when we are bearish, you don't expect कि इसके ऊपर है, क्योंकि balanced price range are supposed to hold price to the downside. Do you understand? Right? Balanced price range का low किधर है? इधर. यहाँ. What's that? Zoom in, zoom in, zoom in. Let me take this off. Let me take this off. Let me take, इसको मैं थोड़ा light कर देता हूँ, new day opening gap को. Bang on right there. You see that? It doesn't get here. It doesn't get to those relative equal highs here. 1 hour के market maker buy ball के जो highs थे. Just expecting. नहीं मिले. देखा? Nobody's gonna fucking tell you this. That's how ICT top ticked. He taught me this, man. He fucking taught me this, bro. Plus, sell side पड़े है. Right? ES पर. You see how everything is एक साथ आ रहा है, सब चीज एक साथ. Everything is combining. ES पर हमारे पास, again, एक smooth body था. इधर, यहाँ. ये इसका low, ऊपर देखना, okay? Open and low को check करना. Open is at 490 and even, 7490 even, low is at 7490 and even. That's a fucking devil's mark. Plus, हमने Monday expanded. When we make an expansion, ऐसे, on top of that we're bearish. We always anticipate कि उसका equilibrium reach होए. इधर. Reach हुआ कि नहीं हुआ? हो गया इधर. Look at the bodies. Right, now. Okay, as I said, I wanted them to run it up higher. They have successfully. Okay, new day opening gap. Up, I want to see what the opening range gap acts is. I really want to be if... I don't want to marry a bias. It depends if price can... अगर मैं इसको, if I want to long this... It's 1050 macro. ठीक है. अब मेरे को देखना है if they want to make a run. हमारे पास relative equal lows पड़े इधर. Again, सब purposely होता है भाई लोग. Final sell side there. ES पर हमारा अगर देखे, I think ES is also relatively equal. Yeah, it is. So, bro, Shreyansh bhai, so that was the explanation. That's what NQ did. Nothing much. That's what NQ did. डॉलर गिर रही है, ठीक है. डॉलर जब गिर रही है, मैं देखूंगा ये relative equal lows को, ठीक है. तो मैं एक्सपेक्ट करूँगा कि नैस्डैक क्लाइंब अप हायर करे. दैट्स व्हाई सेइंग कि शॉर्ट मत करो, लेकिन ऑल दैट. बट अगेन हमारे पास फिर अगर मैं वहाँ की चूत देखा, हाउ आई एम कॉन्ट्रडिक्टिंग माई सेल्फ. पहले कह रहा है कि फर्स्ट प्रेजेंटेशन, राइट, फिर कह रहा है कि relative equal highs. Again, मेरे शब्दों में ही you can understand it's a fucking Friday. है ना. 1050 macro ही है अभी. So you're going to be notice opening range gap low, kisses it, leaves it. यहाँ से I told you, यहाँ से if it can really come up down to the downside is what I want to see. Bro, what time frame? Again, doesn't matter. Bro, that's the most... Bro, I'll be honest, bhai.
टाइम फ्रेम डजंट मैटर. आप स्ट्रेस मत करो भाई, टाइम फ्रेम कुछ भी यूज कर लो. मैं प्रेफरेबली यूज करता हूँ भाई डेली ऑन द लेफ्ट, 1 minute on the right. Okay, that's my usual settings, right? But again, I have so many charts open here. Like मैं NQ को थोड़ा zoom out करके भी देखता हूँ, थोड़ा ऐसे like only with the higher time frame PDA race मैं 60 minute कभी देख लेता हूँ, right? कभी मैं 4 hour कभी देख लेता हूँ, 15 तो मैं हमेशा देखता हूँ, राइट. एक चार्ट है मेरे पास ओपनिंग रेंज गैप के. अगर आप टाइम फ्रेम के पीछे भागते रहोगे, टाइम फ्रेम्स पर कोई देयर इज नो मैजिक इन टाइम फ्रेम्स. लेट मी बी ब्रेक इट यू. मैजिक इज इन दीस कलर्स हियर. ये जो ग्राफिटी बना के रखा है मैंने, मैजिक इधर है. मैजिक इधर है. गोल्ड पर भी मैजिक इधर है. सी, यहाँ मैजिक है. टाइम फ्रेम पर क्या, हर टाइम फ्रेम पर देखो वहां से मैजिक मिल रहा है. सी, इधर देखो, इधर देखो. डस टाइम फ्रेम मैटर हियर? 4 hour पर भी जाओ, टाइम फ्रैक्टल है. सो हाउ द हेल वुड टाइम फ्रेम मैटर? अगेन दिस इज द सेम थिंग ब्रो. डेली टू 1 minute मेरा भी ऐसा ही है. डेली टू 1 minute. ओके, अगेन आई एम गोना ट्रस्ट दिस रन टू relative equal lows. ठीक है, आई एम गोना ट्रस्ट इट. एंड सेल साइड हियर एज वेल एज हमारा फर्स्ट प्रेजेंटेशन इधर है. एनक्यू पर वी हैवंट रीच्ड इक्विलिब्रियम एज वेल. So no, that's our equilibrium aligning with a fucking sell side. Okay, now that should be enough for you to take out a small little portion from this. If I'm reading this, putting range gap low, inversion, I would see what this FEG does. Okay, I would see it. I would want to see what it does. Right? अगर single pass up हो जाए तो हमारा short idea fuck हो रहा है. But new day opening gap है current. Right? थोड़ा अगर overshoot करना चाहे तो कर सकती है. At the same time, we're gonna take a look at yes. Okay. Uh, let's see. Relative equal lows 15 second है ये. यहाँ से देखते हैं भाई क्या होता है. First of all, let me go to my trade weight. Fucking log the fuck out of here. I don't push buttons. Imagine, bro. Imagine. ये क्या हो गया? Okay. Again, I'll be watching this. All right, I guess. Suddenly, if it can displace speed, right? Like this, disregard this bullish order block here. ठीक है? उसके mean threshold को ETH through कर जाए. That's gonna support my bearish idea towards these relative equal lows here. And Q पर भी relatively equal lows. Watching that. यहाँ हम stuck है between two PDAs. That's this bullish order block and that's this premium wick here as well as this inefficiency here. ठीक है? अब हम देखेंगे कि if they really want to take it to the sell side, हम read कर रहे हैं price को. हाँ, एक बेसी है. There is nothing here. ठीक है, लेफ्ट साइड पर कुछ है नहीं. which is not. अगर कुछ था तो we could use it as a inversion array or a reclaimed array. I mean a reclaimed array. But I hope charts दिख रहे हैं भाई, दिख रहे हैं right? हाँ भाई, I am using daily 4 hour 15 minutes 1 hour confuse करता है. कैसे confuse करेगा bro? I don't understand. I use daily 4 hour 15 minutes. Which time frame do you trade on? वो मेरे को बता. What time frame do you trade on? If the bodies can close below the SIBI. सर macro as well है ना, हमारा macro time भी है ये 10:50. That's our London close macro. We anticipate a little.
That's not bad for a close. Again, the reason I don't want to go long is because of these relatively equal lows here. Usually I would have gone long, but यहाँ जब relatively equal lows ऐसे छोड़ दे हैं, थोड़ा मुश्किल होता है भाई. फिर macro. Bro, what time frame do you trade on, Sunil bhai? Sunil bhai, what time frame do you trade on? 1 hour confuse करता है. How? अगर 15 कंफ्यूज नहीं कर रहा है तो 1 आवर कैसे करेगा? 1 आवर में सिर्फ 15 के क्या 4 कैंडल है भाई. द बॉडी इज रिस्पेक्टिंग द विक आई मार्क्ड. ओके, इसको हम कुछ भी बुला लो. ICT will come up with a word, I'm pretty sure. Let's call it I don't know, this wick here, selling short at that equilibrium right there at the right time of day. Relatively equal lows here. I want the drop to be sudden, speed below this low. कौन करता है भाई ऐसा कैंडल बाय कैंडल? कौन सिखाता है? नोबडी डज इट मैन. सबको आपके पैसे चाहिए, सबको आपको लूटना है. मेरे को पैसे नहीं चाहिए भाई. मैं पैसा, मैं आई मेक माय मनी टू ट्रेडिंग. आई एम अ रियल ट्रेडर निगा. आई एम अ रियल ट्रेडर ब्रो. आई एम अ फकिंग रियल ट्रेडर. Trade up into it. I don't want bodies to come past above the consequent encroachment of that SIBI, right? Also because हमारा Thursday का first presentation मैं दिखा देता हूँ. कल का first presentation हमने left it as a breakaway gap there, include the volume imbalance. Right, we're gonna mark its first utilization. That is blue. I'm fucking with this first utilization word so much. Gonna be a DOL. We're gonna sell short right there, anticipating a run lower. Risk will come off once these lows are taken off. Look at ES. They're daily busy, so that's gonna start acting as an inversion array, isn't it? Oh, it will. Maybe. I think that's a divergence at this high. Oh yeah, a little divergence here. So if this is gonna be that one trade a year day, you're gonna sell short, right? We're up. 90 बन रहा है. Well, nobody's gonna take this, but again, ऐसा कुछ करूँगा. But again, take partials along the way. ज़्यादा anticipate मत करो. थोड़ा देखो closely. P&L के बाद से ऐसे box draw करने के बाद आप पैसे के बारे में मत सोचो. Look at what the fucking candles are doing. पैसे के बारे में नहीं सोचते भाई. Look at what the fucking candlesticks are doing. They'll tell you the story इधर. Yeah, थोड़ा it's थोड़ा hard for them to close below that inversion. A little problematic. Trade up higher. Let's see. Takes out the short-term low there. So what should we look for? Okay, Ronnie bro, I was looking at the market expecting to take daily high first so I could take a short, but instead made a small push. Daily high then reversed. Yes, that's exactly what happened. I get it. That is exactly what happened.
So you missed out the short is what you're saying. Oh yeah, that short is gonna get disrespected again because nothing was on the left side. A little problematic. Relatively equal lows today. So if people get stopped out right there, you're literally done for the fucking day. That's what people cannot understand. What should we look for to sell short in this case? Oh, bro, if you want to look for sell short, just wait for them to reach a bit, little bit of a, let's call it, little bit of a premium. New week opening gap तो है इधर. अभी देखो भाई क्या होता है. Let's see what happens here. What's dollar doing? The dollar is bearish. Dollar can be bullish for a while. Again the stop तो hit हुआ नहीं है भाई. देखो भाई करती क्या है देखो भाई. Again I said no bodies above the consequent encroachment here. थोड़ा bodies close हुए, wicked it, right? Again relative equalize बन गए. देखो देखो भाई मैंने वो मार्क विक किया था इधर. That wicks consequent encroachment respected here. थोड़ा tough है भाई honestly. 11 AM के बाद there is no first presentation. 6 मिनट हो गए. अभी थोड़ा जॉब कर सकता है because फ्राइडे है राइट. हमारे पास ये बाई साइड हाई डे दी हाई डे ठीक है. और हमारे पास ये सेल साइड विच इज लो ऑफ डे. थोड़ा करो भाई लो डे. Where is price closer to low of day with relative equal lows with the first presentation breakaway gap here, right? Takes out the short term high. Speed is what is missing. अगर वो भी अगर मिल जाए तो बढ़िया लगेगा. Where bro? Where are you long? Here or here? I hope you longed here because I want you to win. I want you to win, brother. Everybody in the chat is a winner. Am I right? Everybody in the chat is a fucking winner. Everybody in the chat is a winner. Oh Jesus! I'm gonna end the live in about 10 minutes, guys. Chota live hai. I'm gonna end about in 10 minutes. What did our old man do today? ICT के execution check करो. That nigga has already marked the new day opening gap जो मैंने mark किया था भाई. I'm a fucking hell no. Just join my live stream, brother. टोनी भाई कब लो कॉन्फर्मेशन पे शॉर्ट मारना चाहिए और कब सम एक्स्ट्रा कॉन्फर्मेशन के लिए वेट करना चाहिए. Time a day, bro. Time a day. Always time a day. Macros, lunch reversals, lunch macro, lunch retracements, fucking 9:50 macro. Let's call it, I mean, silver bullet 2 a.m., 2 p.m. macro, market on close macro. That's going to be your answer. Confirmation is speed and then a fair value gap. And that's signatures. Look at that. मैंने वो wick mark किया था इधर. Look at the bodies respecting. Bodies इधर close हुए but traversed lower. अभी inversion के अंदर close हो रही. That's a signature. Now again फिर से it's again the short idea is very valid here, right? Short term low here. इसके consequent encroachment को eat through कर जाए exactly like that. इसको attack कर, इसको attack कर, इसको attack कर. Again मेरे को real time चाहिए मेरे को देखना है as we are speaking. To be honest, Ronnie is one of the realistic people in this industry. I'm always thankful for. Fuck yeah, man. Thank you, man. Appreciate that, bro. Appreciate that, brother. Appreciate that. Appreciate that. Really appreciate that. Bro, I don't know how ICT held the whole move, man. It makes me feel bad. Oh,
Amir, brother. You shit, I forgot that's your name. Arey bahan show. Fuck yeah. How you doing, bro? How you doing? How's everything, man? Been a while. Text me on Instagram, brother. How's 2022 going? How's these days? How's these markets fucking treating you, man? Friday, 25 degrees up course low. कर रहा हूँ भाई अगले महीने. Next month, brother. Doing it next month, bro. I'm gonna take batches. Batch लूँगा भाई 10 बंदे को. Take like 10 people, select them. फिर bro, I'm trying to sort out a few things in my life as well. तो ये भाई 1 या 2 महीना के अंदर हम launch my fucking mentorship. हम बैठेंगे भाई. Again, full support रहेगा. Technical support, messages, सब, everything, you know, it's gonna be a really worth to the penny, like to every penny you pay, to like every money you pay, it's gonna be really worth it. I'm gonna make sure you get access to me. See, the thing is, I'm not gonna sell a product as a video या PDF या ऐसे. What I'm selling is my time. क्योंकि what you need is not a strategy, is not something like that. But what you need is someone that you can sit and talk to. Someone with fucking experience. That's what everybody misses. They need somebody to talk to. वो बातों बातों में ही the amount of knowledge that you can gain is so bro, SMTs work as SMTs work. Relative equal lows. Fuck yeah. Bro, SMTs ऐसे ही होते हैं भाई गोल्ड में भी. See again, I said कि ये जो सिबी है, it's gonna act as a reclaimed सिबी. टच हुई, गिरी. Again, देखो भाई. It's bro, SMT is the same, man. SMT, gold, silver, man. Silver, bro. You're gonna watch silver. XAG USD. देखना कि कौन सा हायर हाई बना रहा है और कौन सा हायर लो बना रहा है if you're selling. और देखना कि कौन सा लोअर लो बना रहा है, कौन सा हायर लो बना रहा है. Lower low and the lower high. I have no idea what I just said. Comes back, okay, touches it, edges us, ठीक है. ये बन गया हमारा प्रीमियम विक, ठीक है. That's gonna act as a premium wick. Bro, ICT का sequence for trading Nasdaq would be 2022, 2023, 2024, 2025, 2025, 2026. 4 साल. 2022 to 2026. बस. But you have to watch every single video. You have to watch every single video. You have to watch the video. हर video देखना पड़ेगा. If it fails to reach to that inversion, that would be a nice signature. Right, use that discount wick. I don't want to see a close above that discount wick. 3 seconds. Okay, we've closed above it. Fuck. That's just the inversion. ठीक है. Let's watch ES. ये जो हमारा है daily basi है, right? So this is gonna start acting as an inversion array, right? हम उसके. I mean, if they want to act as an inversion array, they don't. They can run it up higher. I don't mind. Ooh, 26. Week opening gap. Look at the bodies at the new week opening gap. ICT ने ये new week opening gap को use किया था. Bro, you know, selling without confirmation, always make sure कि आपके पास एक new week opening gap या new day opening gap होए. Right, that's gonna be your
They are the next best things, bro. I'm telling you. Yeah. I'm on video 12. Let's go, man. Some people are saying the order flow is much better than ICT, and ICT is just scam. What are your view on this? Oh well. What do you think my view is gonna be? What do you think my view is gonna be? Do I not lick ICT's ass every morning on Instagram? Jesus Christ, this is the funniest guy ever, bro. What is order flow, by the way? I have no idea. I haven't even checked out. कि मेरा दिमाग इतना it's like ICT concepts. It's not like I believe in ICT concepts. I know ICT concepts because you can only believe something you don't know. Once you know it, once you see it, there is no belief left because you know for a fact that this is actually there. Because literally, bro, order flow वाले बंदे पैसे बनाते हैं तो बनते होंगे बने it can बनते हैं भाई bro, as long as you're making money. But आप इसके बीच में अगर स्टक हो कि ये कह रहे हैं कि ऑर्डर फ्लो अच्छे है और ये कह रहे हैं कि आईसीटी अच्छे है और आप बीच में देख के दोनों को देख रहे हो, अगर now if this is you, if this is anyone, again what are you doing? क्या कर रहे हो? Pick one and get into it. Pick one and fucking get into it. How are you gonna कैसे पता लगेगा unless and until you fucking try. एक बार give ICT concepts a test honestly. फिर भाई कोई Wyckoff, Wim Hof, Wyckoff, Elliott waves, order flow, and what is this price action? By price action is ICT, man. I don't know. What's the meaning of price action, bro? You higher high, higher low is price action. Is that what you mean by price action? Oh fuck! It's a little kid in here. I'm sorry, man. I'm sorry, kiddo. I'm sorry, kiddo. Bro, ICT, man. Like, don't look left and right. I'm telling you, you're 15, bro. Spend 5 years licking ICT. By 20, you'll be a fucking profitable day trader. 5 years you have to spend licking his fucking concepts, paper trading, engaging with the markets. So with, you know, if you can afford blah 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 all that shit. By 20, you'll be a fucking profitable day trader. Always, man. ICT all the time. There's nothing better than ICT because the amount of, see again, मैं ये short read कर रहा था. मैं आपको, अगर आप naked chart देखोगे और आप अगर आप इधर आके देखोगे, आपको logic दिख रहा है इधर. See how look at the bodies respecting. ये CB को touch किया. Look at again जो मैंने wick mark किया है, वो wick को फिर से wick किया इधर. Comes back below the discount wick. Now this is gonna act as a fucking order block right there. Discount wick के नीचे आ गया. I'm gonna if sell that bitch ass. Sell it, expecting कि ये lows target हुए. Sell it right there. Right there, sell it. Sell it, bro. Sell it, man. Confidently sell it. Sell it right there. Right there. Fucking sell it. Scalp करना सिखाता हूँ. 47 handles for you. 347 handles. Sell, 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 sell. This is all of this is a sell. Up close देखकर डरियो मत. Up close देखकर कभी मत डरना when your bias is bearish. Bias is very, I mean, your DOL is important. DOL, bro. Hello, Paji. की हाल चाल? बढ़िया भाई. कैसे हो भाई? What's going, man? What's going on, brother? What's going on? Bro, you do live, bro. Did you find me on YouTube? Short video vines. आपने मेरे को YouTube पर दिखाया? I want to know if if the algorithm is promoting the live. Okay. Bro, not daily, but at least twice or thrice a week करता हूँ मैं. Friday को करता हूँ, Monday को करता हूँ, Tuesday को भी करता हूँ. बस तीन दिन करता हूँ. Monday, Tuesday and Friday. Touches the order block, ठीक है? We're inside that premium wick. मैं वही ERL and HRL वाला हूँ. Oh. Yes, sir. अब समझ आया भाई. Fuck's sake. DMs are fucking flooded, bro.
तो HRL और ERL राहुल ओह अभी सुन रहे हैं भाई बाय योर वॉइस लाइक मैंने लैपटॉप का वॉल्यूम प्लस प्लस कर दिया स्टिल नॉट ऑडिबल यहाँ पर थोड़ा दूर था भाई अभी अभी तो भाई पब्लिक बनाने वाले हैं बी रेडी पब्लिक बनने वाले हैं बी रेडी हाँ बढ़िया भाई बढ़िया पब्लिक बनने दो भाई यार फक है और पब्लिक में 1 मिलियन हो जाए भाई I'm gonna be the same fucking guy जो अभी वो ऐसे होगा वहाँ की चूत भाई okay. Last week I breached my 200 due to news SL doesn't hit due to news why did you trade news 15-year-old kiddo who told you to trade news ये बड़ों को देखकर न्यूज व्यूज मत कर ट्रेड करते right who told you to trade news you want to pass it हाँ CPI पे पास करने वाले थे क्या SL got hit got daily drawdown limit Jesus हाँ वो रोज इमोजी के साथ बढ़िया भाई मेरे को भी भाई मेरे को भी भाई मेरे को मजा आता है मेरे को भाई रोज मजा आता है ब्रो लेट्स फकिंग गो हम हमेशा रहेंगे अब फक ये मैंने कहा एलटीवी को लोज उससे नीचे हमारे पास ये एलटीवी को लोज है इसके बिक को ईट थ्रू कर जाए इसको कर ईट थ्रू कर नहीं पाए अब इसको ईट थ्रू कर जाए एक ही झटके में ले ले आज ही आपकी आवाज मेरे कानों तक बहुत मुश्किल से पहुंच रही रियली मेरे को समझ नहीं आ रहा है जो द हेल सुना ही नहीं दे रहा क्या ओ वेट अ मिनट भाई मैं वही ERL NHRL वाला हूँ भाई वो कौन है भाई टेक्स्ट मी अगेन ब्रो मेरे आई डोंट नो आई कैन नॉट फाइंड यू राहुल इंस्टाग्राम पे राहुल राहिल राहिल अरे दोनों है भाई भाई मेरे पास है फंडेड्स भी है थोड़े कॉपी ट्रेड हो रहे हैं बहुत सारे ट्रेड सिंगर पर और एक लाइव भी है वो भी कॉपी ट्रेड ही हो रहा है अभी है मैंने इसको ऑन कर दिया ओह भाई आपको पता हो मैं हूँ इंस्टा पर कौन हूँ लेट मी गेस रॉ ट्रेड्स हो क्या वो हंटर एफएक्स इंस्टा पर भाई नाम भी बता दो भाई ताकि पता लग जाएगा सब्सक्राइबर्स कितने हो गए भाई 212 213 भाई
नाइस भैया, बढ़िया बनते हो आप, डेली व्यूअर बन गए। फक या, लेट्स गो डेली व्यूअर, फकिंग गो। ऑर्डर ब्लॉक डाउन क्लोज हियर। स्टॉप किधर थे भाई, मैंने जब बॉक्स इधर थे राइट। I told you sell that, sell that, sell that, sell that bitch. I told you, sell that bitch right there. I told you. Up close देखकर डरियो मत, sell करो भाई. Sell it, 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 sell, 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 sell. Sell, 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 sell. Let's go, let's go, let's go, let's go, let's go. मैंने कहा. Again, bro, ये तो कौन करता है भाई? कोई नहीं करता. I'm a skip time, see my wrist down. Everybody wanna fuck me for benefits now. Man, I wish my niggas smell like see me lit now. Sit down, baby, roll up, close spit now. I ain't go buy niggas chain so much. Why the fuck this niggas looking at my chain so much? This mag is far from the game so much. Cool है भाई, काम करना है, मंडे मिलते हैं, ठीक बढ़िया भाई, मंडे मिलते हैं भाई, मंडे 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 फक या, मंडे भाई, काम करो भाई, काम करो, पढ़ाई करो भाई. 15 साल, 15 साल कौन से क्लास में थे भाई, 10वीं में. I'ma skip town, see Morris town. Everybody wanna fuck me for benefits now. Man, I wish my niggas smell like coulda see me lit now. Sit down, baby, roll up, blow spliff now. Time go by, nigga change so much. Why the fuck these niggas looking at my chain so much? They just mad I depart from the game so much. One false move and the gang going bust. Ninth. Oh man, I remember Mera ninth, bro. Fuck, my ninth was one of my best years, man. One of my best years was ninth grade. Tour भी था, फ्रेंड्स भी नाइन्थ में इतने बढ़िया थे भाई. नाइन्थ में गर्लफ्रेंड ही नहीं, बट एक बंदी को देख रहा था मैं, 10वीं में वो बन गई गर्लफ्रेंड. वो सीख रहा है भाई, वो ट्रेड कर रहा है. आई डोंट थिंक ही इज ट्रेडिंग. सीख रहा है गेस. ओके बॉयज, लेट्स फकिंग गो. मैंने कहा था सेल साइड लिटरली ये मूव बन गया, मूव दे भी दिया. इवन दो ये सिग्नल सर्विस वर्विस नहीं है, मैं इधर सिर्फ आपको, मैं पैसे बनाने किसी को नहीं सिखा रहा, मैं आपको कैंडलस्टिक्स रीड करना सिखा रहा हूँ. और रीड करके आप अपने स्किल के अनुसार आप डेवलप कर कर अपने पैसे खुद बना लेना. दैट्स माय होल इंटेंशन. क्योंकि बहुत बंदे कहते हैं कि अगर मैं मेरा स्ट्रैटेजी आपको दे दूँ तो मैं पैसे कैसे बनाऊंगा. आई एम नॉट वन ऑफ देम. मैंने आईसीटी का ट्रेड लिटरली आपके साथ गो रिवाइंड कर लो, आईसीटी का ट्रेड मैंने एक्सप्लेन कर दिया. हाउ आईसीटी शॉर्ट टॉप टेक राइट. मैंने इधर लिया थर्ड कैंडल पर, एंड आईसीटी ने होल्ड किया. मैं आई कुडंट होल्ड फॉर सम फकिंग रीजन, मैंने क्लोज कर दिया. द रीजन फॉर क्लोजिंग वाज दैट वाज माय टारगेट. मेरे को फ्राइडे उतना ही चाहिए था. दैट्स कॉल्ड रियल डे ट्रेडिंग ब्रदर. दिए बोल रहा है ना वो भाई, हाँ वो तो सही है भाई. 15 साल झूठ बोलते हो क्या. आई थिंक फंडेड मिल जाता है भाई. आई थिंक मॉम पापा के, पापा और मम्मी के पैसे ले सकते हो शायद. आई एम नॉट श्योर. We have this little busy. हमने मार्केट मेकर बाई मॉडल में we used it to go higher. That's gonna start acting as an inversion. यहाँ के जो देखा inversion. So every array which was here, आपको एक जादू दिखाओ. ये सब जो बुलिश ऑर्डर ब्लॉक है इधर, मैं आपको, ये एक बुलिश ऑर्डर ब्लॉक है इधर, राइट, दैट वन देयर, ठीक है. और हमारे पास ये बुलिश ऑर्डर ब्लॉक है इधर, राइट. और हमारे पास ये दोनों ऑर्डर ब्लॉक ले लो, कोई भी ले लो, ये ले लो या ये ले लो, ये ले लेते इधर, राइट. और हमारे पास ये बुलिश ऑर्डर ब्लॉक हो गया इधर, ठीक है. और हमारे पास ये बुलिश ऑर्डर ब्लॉक हो गया इधर. नाउ यू सी कि ये सब मैंने पर्पसली इसको डार्क ब्लैक किया. यू सी यहाँ जो थे, एवरीथिंग दैट गॉट यूज्ड ऐसे ऐसे ऐसे, अभी इसके यूज करके नीचे जाएगी, ठीक है. एवरी अरे हैज एन इन्वर्जन अरे. ब्रो गोल्ड का नेक्स्ट वीक का व्यू, bro gold ka next week ka view is going to be to look at these, to look at 39.42
and to look at 39,960 and to look at 38,886 here to the downside. We gold's view. Dixie का view. LTV को lows पड़े हैं. Dixie देखना पड़ेगा. Okay, anyway boys, let's fucking wrap it up. मिलते हैं भाई Monday मिलते हो गया आज का. Right? थोड़ा गाना वाना play कर. Let's fucking get the hell out of here. Yeah, where the hell is my OBS? Okay. Grippaum, I skipped on to my wrist on. Everybody wanna fuck me for benefits now. Man, I wish my niggas smelly can see me lit now. Sit down, baby, roll up, blow spliff now. Time go by, nigga change so much. Why the fuck these niggas looking at my... Okay, let's see what Tyler is doing. Jaldi dekh lete. Tyler shorted here. He got stopped out. And then he shorted here. मैंने जब कहा था sell that bitch. He shorted. Again, बढ़िया. Okay. All alone she was living. Okay, let's go. हम जाते भाई. Let's play something. Copyright नहीं मिले. मिलने हैं मुझसे आई. Let's fucking listen to NCS bro. क्या कह रहे भाई बंदा. वीकेंड पे भाई का वीडियो आएगा देखना. हाँ भाई आएगा भाई. यस सर. पता है भाई आपको. Fuck's sake. All right, boys. Let's wrap it up. Let's wrap it up right here. Take it easy.